The Chinese smartphone brand iQOO launched its iQOO Neo 6 smartphone in its domestic market last week. In the mid-premium price segment, iQOO Neo 6 happens to be one of the most affordable devices to feature Snapdragon 8 Gen 1 chipset, and now in a new development, this dedicated chip makes sure that the screen is producing accurate colors and automatically adjustments to the environment to offer a better experience in low brightness situations. iQOO Neo 6 has octa-core glass victors on screen, but on the back is purely leather, which looks awesome, and Vivo's coming smartphones also come leather material on the back. iQOO Neo 6 Pro come in 3 color options with the black color. There's also blue and orange. There's a iQOO logo embossed on the back. The frame of this device is aluminum. It's an IR blaster on the top. It's a stereo speaker on the bottom. Next to it an USB Type-C charging port, and its dual nano SIM slot but can't extend the storage. Vivo iQOO Neo 6 features 6.6 inches AMOLED display panel with a full HD plus resolution. The device comes with support for a 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, and 397 ppi pixel density, 1300 nits peak brightness display. This dedicated chip makes sure that the screen is producing accurate colors and automatically adjusts to the environment to offer a better experience in low brightness situations. Additional features on the device includes an in-display fingerprint sensor. The speed is kind of slow, and face unlock is also featured in this device. This device is packed by a 4700 mAh battery unit with the support of 80 watt charging. This is capable of reaching a 30% charge in just 5 minutes. So we will do the charging speed test in the next video, so stay tuned. The iQOO Neo 6 comes in 3 variants. iQOO Neo 6 is priced starting at 2799 RMB in China, and the global version is not announced yet. Here are the prices for all the configurations. Powering the device is a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset coupled with up to 12 GB of LPDDR5 RAM and up to 256 GB of UFS 3.1 storage. The smartphone runs on Origin OS based on Android 12 out of the box. Talking about the camera module on this device, the smartphone comes with a 16 megapixel selfie snapper at the front. iQOO Neo 6 features a triple rear camera setup headlined by a 64 megapixel main sensor. The device also features a 12 megapixel ultra-wide lens along with a 2 megapixel portrait sensor. The rear camera offers optical image stabilization and 4K 60fps shooting as well. Before testing the camera, let's take a look in the camera setting. There are several nice options for photographers who use phone as a photography gadget. You can video record up to 4K 60fps and front cam can video record up to 1080p 30fps. I took some of pictures and videos. Let's take a look. ये मैंने इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाना शुरू की है 1080p पे, और ये जो है अभी सुबह का दिन हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत दिन है। उसके बावजूद भी मैं इतनी गर्मी में ये इतनी मोटी जैकेट पहना हुआ हूँ। इसके फ्रंट कैमरा में जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसके अंदर फ़िल्टर का भी ऑप्शन है और इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जो कलर्स में आपको काफ़ी अच्छे कलर्स देगा, जो डार्क कलर्स दे सकता है या चेंजेस उसके अंदर कर सकता है। तो ये मेरा जो है अभी ये ओरिजिनल है। iQOO Neo 6 में ये मैंने वीडियो बनाना शुरू की है 4K 30fps पे। ये बैक कैमरा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाते वक्त आप इसे जूम भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इस तरह से इतना जूम हो जाएगा। मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ अभी इस बिल्डिंग से, मगर ये जब ये वापस या जो ये जूम करेगा वीडियो बनाते वक्त, जूम आउट और जूम इन काफ़ी स्लो तरीके से करेगा। देखिए इस तरह से करेगा। ये अल्ट्रा वाइड हो चुका है इस वक्त। इस तरह से वीडियोस की ये बन रही है। और अगर मैं इस तरह से दिखाऊँ तो इस तरह से आप व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
आवाज़ का मुझे पता नहीं कि कैसा भी इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका कुछ ऐसा रिज़ल्ट होगा। अगर मैं अभी रनिंग करके दिखाऊँ तो इतना इसका स्टेबलाइजेशन इस तरह से इसका काम करेगा। अभी मैंने वॉक करना शुरू की है और अगर मैं अचानक से बैठता हूँ तो कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट होगा।